The topic we are going to discuss about is S and P block elements, and the subtopics are atomic radius and ionization energy. Let's define atomic radius. Atomic radius is the measure of the size of an atom. It is the measure of distance from the center of nucleus to the outermost isolated electron. So here, half of the distance between the two nuclei is known as atomic radius. If we talk about its trend in periodic table within a group, it increases क्योंकि हर successive period में एक shell increase होता जाता है, while in a period it decreases क्योंकि nuclear force electrons पे ज़्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से वो shell है वो shrink कर जाता है. Next is ionic radius. When a neutral atom loses electron या electrons, वो एक cation बन जाता है. इस process में उसका size decrease हो जाता है. It sometimes loses outermost shell या second और imbalance electron proton ratio हो जाती है. So here you can see sodium atom larger size का है, जबकि जो sodium ion है वो smaller size में. When a neutral atom gains electron या electrons, it becomes an anion. इस process में size increase हो जाता है. Addition of one or more electron in the shell enhances repulsion between electrons, causing expansion of the shell. क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करने के चक्कर में जो साइज है शेल का वो इंक्रीज हो जाता है. दैट्स व्हाई जो क्लोरीन एटम है उसके मुकाबले में जो क्लोराइड आयन है उसका साइज बड़ा होता है. So what about its trend in periodic table within a group? Similar charged ion size increases. जबकि पीरियड में इनका साइज यूजुअली जो है वो डिक्रीज होता है. If we talk about the isoelectronic. Here we have the graphical representation. You can see along a period lithium, then sodium, potassium, rubidium और cesium size जो है वो increase हो रहा है. Similarly for the negative ions भी size increase हो रहा है. लेकिन यहाँ पे we have neutral atoms और यहाँ पे we have cations. तो cations का size जो है वो neutral atoms की निस्बत कम है, जबकि यहाँ पे we have neutral atoms and above them we have anions. तो यहाँ पे anions का size जो है वो neutral atoms की निस्बत बड़ा होता है. So in this table you can see कि जब हम move करते हैं from left to right in a periodic table तो size जो है वो decrease होता है, जबकि when we move from above to bottom in a group तो size जो है वो increase हो रहा होता है. Let's discuss a question. Atomic radius of fluorine is only larger than that its period. Lithium, oxygen, nitrogen or neon, and the correct option is oxygen. Next is ionization energy. It is defined as the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of its isolated gaseous atom in its ground state. For example, sodium जब अपना एक electron lose करता है, it absorbs about 496 kilojoule per mole energy. So what factors affect ionization energy? Magnitude of nuclear charge, size of an atom, shielding effect. Or what is shielding effect? It is actually the repulsion due to electrons in between the nucleus and the outermost shell. So जितनी ज़्यादा repulsion होगी उतना ज़्यादा shielding effect होगा, जिसकी वजह से जो nuclear force है वो कम हो जाएगी. If we talk about its trend in periodic table, it decreases from top to bottom in a group. Why? क्योंकि nuclear charge increase हो जाता है, but उसके comparatively size of atom ज़्यादा increase होता है. Number of electrons causing shielding effect भी increase हो जाता है, जिसकी वजह से ionization energy कम हो जाती है. Nuclear force कम हो जाती है, जिसकी वजह से electron easily जो है वो remove हो जाता है. So in this graph you can see when we move from top to bottom in a group, जो ionization energy की values हैं वो decrease हो रही. Lithium की सबसे highest है और cesium की सबसे कम. Next, in a period, it increases from left to right. Why? Outermost shell तो remain रहता है, वहां पे कोई और increase या decrease उसमें नहीं होता, लेकिन nuclear charge जो है वो effectively increase होता है
क्योंकि प्रोटॉन्स ऐड हो रहे होते हैं. Number of electron also increases, but the shielding effect is not much effect. So here you can see कि ionization energy toward the end of the period वो increase होती है. जैसे helium के सबसे ज़्यादा है, second में neon के सबसे ज़्यादा है, then argon के सबसे ज़्यादा है. Let's discuss a question. If the ionization energy of unknown element is very low, then the element is non-metal, metalloid, metal or semi-metalloid. And the correct option is metal, because metals की ionization energy सबसे कम है. These are 1A elements. This was all about the ionization energy and atomic radius. I hope you have understood it well, and thank you so much.